गुड आफ्टरनून। 2 सितंबर को जब हम आए थे तो पहला प्रश्न हमारे लिए ये था कि फुटबॉल फेडरेशन का रोड मैप क्या होगा और आगे इस फेडरेशन किस तरह से काम करेगी। उस समय हमने कहा था कि जिस तरह से कोई भी डॉक्टर एक पेशेंट का पहले डायग्नोस करते हैं, उसी तरह हम भी समझना चाहेंगे 100 दिन हम देखेंगे हर जहां भारत के भिन्न प्रदेश में जहां फुटबॉल होती है वहां पहुंचेंगे और फिर वहां के उनके क्या सुझाव है ले करके फिर हम फेडरेशन की तरफ से रोड मैप बनाएंगे। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है, पिछले 125 दिनों में मैं और मेरा टीम ऐसे बहुत सारे प्रदेशों में गया है जहां इससे पहले 85 वर्षों में कभी भी फुटबॉल फेडरेशन के कोई भी ऑफिस बेयरर्स या इलेक्टेड मेंबर्स नहीं गए। नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी स्टेट हमने गया, त्रिपुरा, अरुणाचल जैसे जगह में, नागालैंड, मिजोरम में उनके एसोसिएशन की तरफ से और उनके वहाँ के फुटबॉल के साथ जुड़े हुए युवा खिलाड़ियों की तरफ से बहुत उत्साह देखने को मिला। झारखंड में जहाँ इतने सारे प्रतिभाएं हैं, विशेषकर महिला फुटबॉल के लिए, और दूर दूर गांव में जिस तरह से आदिवासी बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, हमने अभी कोडारमा गए थे तो बच्चे ने कभी सिस्टमेटिक कोचिंग के अंदर फुटबॉल खेले ही नहीं, लेकिन उनके जो खेलने की उत्साह, मैं समझता हूं कि उनको भी यदि सिस्टमेटिक ट्रेनिंग दिया जाए तो झारखंड से आगे और सारे खिलाड़ी मिल सकते हैं। टाटा फुटबॉल एकेडमी झारखंड में होने के कारण झारखंड के स्टेट टीम तो हमेशा अच्छी होती है, लेकिन उसमें टीएफए की भूमिका अधिक होता है, ऐसा नहीं कि झारखंड प्रदेश के बच्चों की। तो मैं समझता हूँ कि टीएफए के अलावा भी झारखंड में फुटबॉल कर सकते। उसी तरह हमने गुजरात, जो कि फुटबॉल में इतने सारे उनके इतिहास नहीं है, लेकिन इन दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके स्पोर्ट्स नीति और जिस तरह से मान लीजिए आगे वहाँ पे ओलंपिक कराने जैसे भी ऐसे सपने देखे जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि समझा गुजरात में भी फुटबॉल की बहुत संभावना है। दिल्ली में एक समय डूरान डीसीएम हुआ करता था और देखा जाए तो बहुत सारे फुटबॉल क्लब जो है कब उस सर्दी के समय इस समय लगभग डूरान खेलने आएंगे, जिस तरह से क्लब का टारगेट हुआ करता था खिलाड़ियों को लिए। लेकिन कुछ कारणवश दिल्ली के जो फुटबॉल की जो लोकप्रियता थी धीरे 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 घटते गया। लेकिन एक कैपिटल शहर में यदि फुटबॉल ना हो तो फिर वो फुटबॉल इंटरनेशनल नहीं बन सकता। आज कोई भी इंटरनेशनल गेस्ट जब एक कैपिटल शहर में आते हैं तो डेफिनेटली उस शहर का भी भूमिका रहता है देश को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली में फुटबॉल की बहुत ही संभावना है और उसकी हमें भी जरूरत है कि दिल्ली फुटबॉल में अच्छा करे। झारखंड की बात की, वहाँ पे खेलगांव बोल के एक जगह है, आपने भी बहुतों ने गए होंगे वहाँ पर। 2012 नेशनल गेम्स के समय एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था वहाँ, लेकिन बाद में उसकी जो सदुपयोग होना है वो हो नहीं पाया। तो हमने सोचा क्यों ना वहाँ के जो इंडोर स्टेडियम्स है और वहाँ पर हमने एक डेडिकेटेड फुटबॉल चैंपियनशिप करें, तो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी डेवलपमेंट और यूटिलाइजेशन होता है और हमारे लिए भी नया नया पॉकेट्स खुलता है। जो भारत में मान लीजिए जो नोन पॉकेट्स हैं, पश्चिम बंगाल, केरला, गोवा,
मणिपुर, ऐसा नॉन पॉकेट्स के बाहर भी फुटबॉल बहुत है, बहुत फुटबॉल है, लेकिन शायद हमने वहां पहुंचने का प्रयास नहीं किया इससे पहले। तो हमें लगा कि बोरोलैंड, असम के एक छोटा सा ऑटोनोमस काउंसिल बोरोलैंड, कोकराझार जिला में, वहां मैंने एक 6 काउंसिल का इंटर काउंसिल चैंपियनशिप देखने गया, और वहां उन बच्चों की अर्ली 20s युवा खिलाड़ी की जो मैंने इंड्योरेंस और उत्साह देखा, वहां के जो भीड़ मैंने देखी, जो लोकप्रियता देखा, तो मुझे लगा कि इतने छोटे छोटे पॉकेट्स में भी फुटबॉल की स्कोप है। हमने इस 125 दिनों में शायद ही कोई ऐसा जगह रह गया हो जहां फुटबॉल होता हो और हम नहीं पहुंचे। कश्मीर के डाउनटाउन जो शहर है, वो जो टाउन, वहां 70s 80s में फुटबॉल इतना पॉपुलर हुआ करता था। वहां के लोगों से जब मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि साहब शहर बंद होता था जिस दिन वहां पे किसी दिन फुटबॉल हो, लेकिन आज हमारे वहां फुटबॉल नहीं है, लेकिन संभावनाएं बहुत है। तो हमने सोचा किस तरह से कश्मीर में जो पुराने उनके फुटबॉल के प्रति उनकी जो लगाव था और उनके फिजिकल स्ट्रक्चर जैसे हैं जिसमें फुटबॉल की लाभ हो सकती थी, वो हम ला सकें। उसी तरह हरियाणा, पंजाब में, हिमाचल में किस तरह से वुमेन फुटबॉल की डेवलपमेंट हो, क्योंकि आपने देखा कि अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होस्ट करते हुए हमारा ये अनुभव रहा कि जिस तरह से अंडर 17 की चैंपियनशिप की परफॉर्मेंस रहा, उससे शायद बेहतर खिलाड़ी हमारे देश में है, और कोई भी कारणवश उन तक हम पहुंच नहीं पाए, और वुमेन फुटबॉल को भी हमें देखना है। इस दौरान हमने AFC और फीफा के कई प्रतिनिधियों से, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ फीफा हो, प्रेसिडेंट AFC हो, सेक्रेटरी जनरल फीफा हो, सेक्रेटरी जनरल AFC हो, साफ के प्रेसिडेंट, साफ के सेक्रेटरी जनरल, और भिन्न भिन्न प्रकार के जो पदाधिकारी जो तरह तरह के काम देखते हैं, जो हम जैसे देश जिनकी रैंकिंग बहुत खास नहीं है और हमें कहने के लिए बहुत गौरव नहीं महसूस होता है, ऐसा रैंकिंग वाले एक देश किस तरह से फीफा, AFC और साफ के साथ अपना इंटरनेशनल रिलेशनशिप बढ़िया बना करके अपने देश के फुटबॉल को लाभ पहुंचा सके। हमने पिछले 125 दिनों में 5 बार फीफा प्रेसिडेंट से हमारा मिलना हुआ, और मैं समझता हूं कि 106 रैंक वाले फुटबॉल के एक देश के लिए ये बहुत बड़ा प्राप्ति है कि जहां फीफा प्रेसिडेंट के साथ आप बात करते हो और अपने फुटबॉल की दिशा क्या हो, भविष्य की रूपरेखा क्या हो, उस पर आप बात कर सकते हो। जब 2 सितंबर को हम आए थे, तो एक मेरी बात कई लोगों ने उस पर चर्चा किया था कि हम यहां पर ऐसा कोई शॉर्ट टर्म या कोई भी बिना सोचे ऐसा नहीं कह देंगे जिसपे सपना बेचने वाला लगे, वी आर नॉट गोइंग टू सेल ड्रीम्स। ऐसा मैं बहुत सारे हेडलाइंस बना था कि कोई भी फेडरेशन के, फुटबॉल फेडरेशन के हमारे जो पिछले प्रेसिडेंट आए या पिछले कमिटीज आई, हमेशा एक टर्म आगे का या 2 टर्म आगे का वर्ल्ड कप के तारीख बता करके बोल देते थे कि भारत जो है फलाना वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप खेलेगी। तो हमने सोचा कि ऐसा कहना शायद हमारे लिए मैच्योरिटी नहीं कहलाएगा, उस पर हमारे अनुभव, परिपक्वता की प्रकाश नहीं होगी कि हम ऐसे ही कह दे रहे कि 2026 या 30 में हम वर्ल्ड कप खेलेंगे। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि खेलेंगे, लेकिन खेलने की प्रयास और सपना हमारा नहीं है, ये भी नहीं है। तो इस रोड मैप में उस विषय को भी लाया गया है कि भारत, इसमें 11 पॉइंट्स है, 11 विषय है जो आपके सामने रखा जाएगा। इसमें गवर्नेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, रेफरिंग, क्लब, ग्रासरूट, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट, कोच एजुकेशन,
कंपटीशन, मार्केटिंग एंड कॉमर्शलाइजेशन और नेशनल टीम। ये 11 विषय पर हमारी टीम इस पे बहुत समय दे करके कि हमारे एसेट क्या है, हम कहां तक पहुंच सकते हैं, हमारे चैलेंजेस क्या है, इसको देख करके एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म हमने टारगेट बनाया। शॉर्ट टर्म क्या है, 2026, जो कि हमारा पहली ये जो इस कार्यकाल जो है उस कार्यकाल का 4 साल जो है 2026, हम फुटबॉल को, भारत के फुटबॉल को कहां तक ले जाना चाहते हैं और कहां तक ले पा रहे हैं। दूसरा क्या है, बीच में 2037 में फुटबॉल फेडरेशन का भी 100 साल होना है, तो क्या उस तक का हमारा टारगेट क्या है, हम अपने देश को या विश्व को क्या बताना चाहते हैं। 100 साल से एक फेडरेशन की अस्तित्व है और उसने क्या देश की फुटबॉल के लिए किया, और आगे 2047 जिसमें भारत अपने 100 साल आजादी की मनाएगी, तो उसमें भी भारत के फुटबॉल की उस समय की अवस्थान भूमिका क्या होगी। अभी ऐसा जरूरी नहीं है, और हम जानते हैं कि इस 2047 में हमारे इस कमेटी के कोई भी नहीं रहेंगे और ना ही शायद 2037 में हो, लेकिन हम जब तक एक नींव नहीं डालेंगे, जब तक एक पॉलिसी नहीं बनेगी, आगे चल के जिस व्यक्ति इस चेयर पे बैठे या जिस कमेटी के हाथ में इसको चलाने के शासन भार हो, यदि हम एक नींव डाल के जाते हैं देश के हित में, जो कि देश के फुटबॉल के लिए अच्छा हो, कि हाँ ठीक है ये करने से भारत के फुटबॉल के लिए अच्छा होगा, तो कोई भी उस पॉलिसी को आगे ले जा सकता है। तो हमने ऐसा सोच करके कि एक देश की फुटबॉल पॉलिसी हो, देश की एक फुटबॉल फिलोसफी हो, ना कि कोई भी एक फॉरेन कोच आ जाए और हमारा फिलोसफी उसी देश की तरह हो जाए। जब नेशनल टीम के कोई ब्रिटिश कोच हो और ब्रिटिश कोच ने जो बोले तो ही है भारत के फुटबॉल की भविष्य, और उसी तरह से चल रहा है। और यदि पुर्तगालीज कोच हो जाए या ब्राजीलियन कोच हो जाए, फिर उसी की तरह हमारा फिलोसफी बदल जाए। हम एक देश ऐसा है कि देश की अपनी एक फिलोसफी हो, और जो भी कोच सपोर्ट स्टाफ आए उस फिलोसफी को देखते, उस दर्शन को देखते, उस शक्ति और कमजोरी को देखते हुए वो फुटबॉल को आगे ले जाने के प्रयास करें। तो हम एक अपना जो हमारा खुद का एक आइडेंटिटी वो पहले बने, और उस आइडेंटिटी को किस तरह से एक मोल्ड करके आगे ले सकते हैं उसको देखना है। तो मैं चाहूंगा कि एक लंबा है, 94 स्लाइड्स है, लेकिन आपके पास इतना समय और धैर्य दोनों नहीं होगा कितने लंबा आप देखें, तो हमने एकदम शॉर्ट में, ताकि आपको इसकी जो डिटेल पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स आपको समझ में आए, सेक्रेटरी जनरल आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, और आगे जो डिटेल 94 की स्लाइड है वो आपको दे दिया जाएगा। आप अपने समय के अनुसार, अनुकूलता के अनुसार वो देख सकते हैं कि हमने कहाँ इस पे समय लगाया, कहाँ मेहनत किया, और आपके भी यदि ऐसा लगे कि इस पे कुछ जोड़ने से देश के फुटबॉल के लिए लाभ हो, देश के फुटबॉल के लिए अच्छा हो, तो मैं आपसे ये, आप रिपोर्टर होने के बावजूद भी यदि आपको लगे कि किसी सुझाव फुटबॉल फेडरेशन के हित में हो, तो आप इस पर भी कर सकते हैं, और हमारा जो पॉलिसी मेकिंग टीम है इस पर विचार करके उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Dr. Prabhakaran, I request you to please detail the features of the roadmap and take us through the various components within it. Thank you, our President Kalyan Chaubey ji, and our members of the media, our secretariat staff, other invited dignitaries. It's really a momentous occasion for Indian football, and as we are going to launch this strategic roadmap of 2347, as President has already mentioned in his opening remark, that what, why and where we want to be when India celebrates its 100th year of independence. Because whatever we are going to stipulate here, put before you, it's all, you are also going to be an equal partner to take this forward, so that we work as one team, because you as
media will have a bigger role, and you are playing a bigger role in terms of bringing in facts, bringing in the weaknesses, bringing in at the same time the strengths, what one does. So therefore, we treat you as our part of the team, and we work as one to take football forward, elevate the level of football, and what as India can achieve, rather than what we say as not as AIFF. So therefore, very at the end, you will be exhausted, I'm sure, listening to all this. It will be a bit of a monologue. Please bear with us. But then I'm sure at the end you will find it interesting enough to come up with all your questions, because you will have more questions, because that is what we want. That way you will find more answers and clarity to what we are going to share with you. Okay. So now the most important part is the why 2047. Why 25 years? Why not 50 years? Why not 100 years? Why not 4 years? But then we as thought, as a team, that 2047 is a momentous year going to be for India, and football should not be lagged behind, because other areas in India is really going very fast, and playing a bigger role, defining even the way the world should be in 2047. Therefore, football will have to play a very important and significant role in that time, and that is where 2047 comes. And 25 years, I am sure we will see an incredible India and also an incredible state of football in India. So that is where we are setting the vision, and this is where the vision is. This vision statement to make football an incredible sport for incredible India. We all know that India is incredible, and football is a beautiful game. But for India, how we make that football an incredible sport for India, by building an ecosystem which would be a value proposition not only for India but also for the world. So like India is not only going to work for taking Indian football forward, but to play a significant role for the global football as well. So that's the vision we are stating before the world, and that is where our ambition comes in. And it's very ambitious, where people can say, oh, what you have done for India, so that you are talking already about the world. No. If India can achieve something, therefore it will create value for the world itself, for the global football. And the mission is again an important statement, which is again linked to the vision. Football to be a sport of the masses. Globally, it is a sport of masses. More than 4.5 billion people are involved in football. In India, it's still not the sport of masses, but there is one sport which is called sport for masses in India. But we would like to be there with a focus on driving joy in communities, fostering excellence, being an agent of social change through teamwork and collaboration. So see what football can do to the community, so that it brings in hope, joy, happiness, and something which football can give to Indian people. That is where we are putting. At the same time, the excellence is where our team will perform. We as an organization, we as a stakeholder, we will be putting across everything at the best possible manner. And this is all possible only through teamwork and collaboration. If we have to collaborate, as I stated, not only with our stakeholders, but across. And that's very important. And we need to be a sport which really puts a mark in India's progress. And that's very important. So our value system is definitely very important key element. These are not just words. This means, like in our work, in our action, in our dealings, in every aspect of our work, this should reflect. And not only by us, we would like to
see this in our stakeholders as well. That's integrity, respect, excellence, inclusion and teamwork. This is again inconsistent with our vision and mission. And we will practice this, we will reflect this, we will be demonstrating this through our work throughout. And then, what is that 2047 means? Like, see, this 2047 will be divided into 6 different cycles. And the first cycle is where there's a new management, new committee, that's 22 to 26. And then the second cycle we will devise based on what we achieve and towards 2047. What we want to be, where we want to be in 2047, that's very key. We want to be top 4 in Asia. Is it possible? Yes, possible. And we would like to see a vibrant football ecosystem in India. Is it possible? Yes, of course. One of the top 3 football leagues in Asia. Definitely this is also possible. Yeah, in both the genders. And at least one iconic player with international stardom in both men's and women's football. See, what we lack today is, like an iconic figure. We are very sure by 2047, football will throw up a superstar, who then will be the magnet, who will be the magician, who will be the point of attracting everyone to it. Like, we would like to have a story of maybe having a Mohamed Salah, if not Messi or Ronaldo. If we reach there of say what Mohamed Salah is today for Egypt or Africa, definitely. Is it possible? Yes, we are the human capital of the world. Therefore, football also has talent. But then we have to reach to every talent that we will see that how we are going to address that. Yeah. Then the most important aspect, as President mentioned in his opening remark, we have to have our national football philosophy. Today, we don't know what philosophy we have as a nation, as a football organization. And if we want to be consistent, we have to have our own philosophy. We need to see the coach who fits into this philosophy and there is continuity from across. So that would demonstrate not only in our national team performance, we want to see what is the level of players we should have, what is the quality of players we should have, and what is the style of game we should play based on our own strengths in India. And that's very important. And this is not something we are going to invent in football, no. This has already been practiced by different nations in different countries who are successful. So we would like to bring in this philosophy into Indian football, and that is where we will be consistent. That is where we will be, having a road. Where, because we have the destination, everybody has a destination, and the destination everybody talks about is when we should be in World Cup. So that's one destination. But then we are creating a destination through this philosophy which would be consistently working towards achieving that. Whoever the coach is, whoever the support staffs are, whoever the youth coaches are. Therefore, our national philosophy of football will define what should be our coaching curriculum, what kind of coaches we would like to have, what they should practice, what they should train, and what kind of scouting structure we should have, what kind of players we should scout, and what kind of development initiatives we should have. So all this will define, and it will be data driven. It will be data driven. It won't be like, once somebody thinks in their mind, everything is in their mind. No. Today we don't have data. No data available. In an organization which is 75-year-old plus, we don't have data of minor things. Just forget about, we all have read the stories that come out that we don't have even data of, players who played for the country, who made India proud. So we are very serious about this aspect, that it will be data driven and it will create, a philosophy which will drive us to success in the global football.
So these are the 11 players we would like to, kind of recruit in our football ecosystem. Football is a team game and it's not about one player. So every player in this 11 player makes a team, but at the same time we need a strong substitute bench, we need a strong ecosystem, everything. So therefore this 11 core areas will be the focus for us it's already in our focus since we took over, but this would be very definitive. Every cycle we will be focusing on these core 11 areas, and whether we should have a strong goalkeeper, or we should have a strong number 1, number 7, or we should have a strong number 10 or number 9. So every area is critical. That makes a successful team. So therefore, these 11 players, we need to recruit it right. We have started, mining these 11 players now. So we will be started mining, we'll recruit it, we'll polish it, we'll make them diamond. So those 11 players will create, a structure, a football ecosystem which would take us to the world, and world will value us. So therefore, we'll take each of these areas specific to the governance, as we all have experienced few months back, that India has gone through the biggest crisis in its football history when it was banned. And we all know, I don't want to repeat, but then our focus and our goal is that we have to have a governing system, structure, regulations by which we will never be encountering that kind of phase again. The mantra is organizationally, redefine, rebrand and restructure. So that is the mantra the approach we are working in the organization, where, everything will be on this approach, where we create, realign and putting an organizational structure which would be able to put and adopt the best practices of governance in football. So what we are going to have a new football structure in AIFF. There is 3 pillars, 3 verticals. One is the governance and administration. The second vertical would be football development, and the third is, for the first time in the history of AIFF, we will have a vertical which is complete a business unit, a business and marketing division. That would take care of we will see what our commercial goals are going forward. Because without the right commercial strategies, right marketing approach, we will not be able to implement all of these goals in next 25 years. So therefore, we are very serious about putting the right structure which reflects to govern football in a modern way and bring about that change in every aspect of football in India. So this is, and the other aspect is, like, we have 36 member associations and their capacity is key. We can't leave them behind. We want to work with them very closely, hand in hand, to build their capacity so that they are there to play an important role in the change. And we already started working on it. We are funding them, but funding to build the capacity so that they are able to elevate the football administration, football governance to a level at par with AIFF. So we want to achieve that target by 2026, where every state association is at par in governance. They have that kind of regulations, model, whereby they will be able to consistently deliver football at the highest level, whereby, then only we will be able to achieve our vision and our long-term goals. So whether that is competition structure, whether that is the strategy side, whether that is commercial side,
whether it is talent development, every aspect we would like to build the capacity, because right now, in last 75 years or so, the state associations were neglected a lot. They were not treated at par. We need to handhold them, we need to give them the right support, we need to give them the right motivation, right encouragement, and we are building a complete department for the member association so as to work with them 24/7, build the capacity. And we will also coming up with a very robust evaluation mechanism whereby everyone will be given at the end of the year a status that where you lack, and it will be done in a proactive manner, and that is where we would like to build the capacity, because they will play an important role. And then if we want to govern well sport, there should be an equal opportunity for women. Women's are key. So therefore our focus is equal to women's football in every aspect. Whether that going to be competition, whether that going to be any development initiatives, it will be equal. So therefore we will be coming up with a minimum wage for women players. We will see what are the competition structure we are going to announce before you for the women. So therefore women's will be treated at par. They will get equal opportunity. They will get equal status, every sense. And we also coming up with a safeguarding department within the organization so that they feel safe, they feel secure, they don't experience anything which they should not be, so that they can focus 100% on the game. Yeah, and everybody should feel that they have been taken care in every respect. So that is the model of governance we need to have. And then we have already got the approval to start a foundation, and this is where football would like to link up with community in India. What football is going to do for India, for its people, those who are suffering. So football can be a vehicle for hope, for peace, for happiness. So that way football will, with this foundation, we would be coming up with different programs, projects where we will be aligning with organizations through football activities, football projects, whereby we will touch lives. And you all know as journalists that there are multiple projects across the globe where football plays an important role to bring about social change, social impact, women empowerment, health and hygiene, employment aspect, so every skilling aspect. So therefore this would be spelled out very clearly that football is not only for footballers but for the country. So that is where we need to position the game so that everybody feels that football doesn't only want everyone, but football treats everybody equally, and at the time of the pain we are there to support them. And this is where the infrastructure part, we struggle, I've been in this position for 4 months, I can tell you, we struggle on a daily basis. We don't have, access to facilities, whether it is for national team training or holding matches or for our affiliates. We don't control or have a guaranteed access to anything. It's like, knocking the door of 100 people to get one facility. So we want to see what the sea change in the infrastructure situation of India and how this can be achieved. So see, today we don't have the data, how many football pitches we have, how many stadiums we have, which is of a certain quality. We definitely know the top level stadiums today. But then we would like to go for a complete census in India about every playing facility for football and to have a record by 2025. It's a massive exercise we will do, and then we will see that what kind of policies
we need to bring in partnership with the government, because our goal here would be, because we as an AIFF will never be able to build, that high number of infrastructure and facilities. But here, the government, the municipalities, and through the private public funding and through corporate funding, this will be covered. So therefore, what we will have a policy by 2026. We will also initiate at least 2 football FIFA standard stadium and 1 smart stadium project through the support of governments, maybe state government, central government, or through private corporate. And then we also have, as you know, AIFF has its own National Center of Excellence in Calcutta, and so far it is only 1/3 complete. And we would like to complete the project by 2026, fully operational by that time. It's a 15-acre land, and unfortunately, I don't know, it's still not operational. So we would like to operationalize it. We would like to make that complete, because there is funding gap. We would like to get that funding gap covered within this year and complete the project and operationalize it by 2026. And we would like to come up with a mega park, football park, like what we have heard in England. There is St. George's Park. Similar concept. We would like to have a plan done by 2026, which would be not less than 200-acre land, which we already started the discussion, I can tell you. That's why I have the confidence, we have the confidence to share this with you, that we will have a mega football park by 2047 fully operational. But the planning, the master plan will be done by 2026. That we will announce by 20. The vision for 2047 is that average minimum 50 pitches, standard pitches in every district in India. That accounts to 35,000 pitches, which is not more. Like if you all remember that China announced 4 years back, they would like to build 75,000 pitches. So therefore, this number is sounds that big, but for a country of 1.4 billion, it's not big. And when 2047, we don't know, it will be 1.75 or 1.80 our population. So therefore, that's the minimum we would like to have, that every district must have a 50 standard pitch. If there are no pitches, how are we going to see that more children play football? And we will see what our ambition is there, our target to see. And 30 minimum standard FIFA stadiums and 12 smart stadiums. That's the key, because if we don't have standard stadiums, if we don't have smart stadiums, we all know we live in a digital world today. And smart stadiums is going to define our experiences going to stadium tomorrow. And Qatar we have experience, and we have to think, beyond Qatar. What are the technologies which will come in, which will define the future roadmap on stadium and match experiences? And that is where we will be looking in with the help of the global experts. And we already in touch with them, and we already had a meeting with them, and they will help India. And we all like to see every state to have its own center of excellence where they will be housed. And then we will have, as I said, the most important part, like we all know that our clubs doesn't have, except few, doesn't have their training base. We would like to help them, support them through a policy, through our good officers, through the network, at least 50 professional clubs to have their own training base. And the digital transformation is absolutely key. We would like to completely go into a digital mode of management, our football. And without that, we are all living in our smartphone world, and we see what we experience from that. And sport and football cannot be far away. And we want to be leader here, and that is where we would like to attract the world to India, because our people are genius in developing software and apps, and they are the world leaders. And we would like to innovate through innovation hubs. All that we would like to come and put football into that ecosystem and this complete achieve digital transformation. And this is
where our fans can be engaged better, where we can bring in more revenue to our system and build an ecosystem which to the world of 2047. That's very important. Then the digital transformation is absolutely where we will also have our digital TV, where that is where, as you all know, where the world is living, world is going, and maybe the metaverse kind of a situation for football in India as well. And the digital transformation within our organization has already started, and we will reach there. Like we all know that how FIFA Plus has come in, and what we experienced through when the Qatar World Cup. So we will be looking forward to a much bigger platform, much bigger. That would be India's contribution to global football. And we are very sure we will create something unique for the global football through our digital transformation goal. The refereeing is a key area again. Without the referees, no game can be held, no matches can be conducted, and without good referees, we cannot see a match ending smoothly. And without quality referee, we cannot see our football getting a better headlines sometime. So therefore, the idea is that we need to have referees who can at the end go at a global platform and consistently be officiating at World Cup and global competitions. Our target is to 2047 to achieve that. So we would like to create core centers for refereeing development, and we would be announcing something on 10th that we are going to sign professional referees. And our president has already made this announcement a few weeks back that we will sign 50 professional referees, and that's on course now that we will announce their names, everyone on 10th. You are most welcome to attend that event on 10th at Football House, where this would be the first step, because these targets what we are setting in, we already started working since we took over the office. And the clubs, see, in every football landscape, clubs are one of the most important institutions. And we would like to our goal is to make clubs the center for talent identification and development. Because right now what is happening is that AIFF is looking for talent across the country. But we would like to empower that work to clubs. We want more and more clubs to look for its talent and grow them, nurture them. And then AIFF will look into them and make them the part of the national team. So therefore, club through licensing, we will make them mandatory to have elite player development project with them, so that they are seriously focusing, and it is value for them. We need to empower them, and at least 20% of the top football clubs must have residential academies with them by 2026, and all clubs should have its own scouting network, scouting structure with them. We would like to make that happen, and all clubs of the top division, the top leagues, must have their youth professional sides, which is very important for the development of football. And by 2047, we would like to see 20K clubs in our competitive structure. That when you will see the competition part, you will see that 20,000. Right now we have 4,500 clubs in our competitive structure. 4,500. Yeah. So we would like to grow by 2047 this number to 20K. And it's definitely possible, because that is where you will see that why we are stating that. Without competition, no football can grow, no football can develop. And that is where we would like to really move, that we would like to have more competition, and that's how we will see 100 professional clubs in our top league structure. And when you will go through the structure, you will identify that why I'm saying that 100 clubs. And minimum 20
standalone women clubs. Because today, if you ask the top club or any club who are constantly supporting men club, if you push them to say, oh, you should also have women club, see, anyway they are not able to sustain. And if you add pressure to them, it doesn't work out. So therefore, we would like to see standalone women clubs as well, where they are fully dedicated to women's football. They are only working with girls. That way they can fully focus on women's football development. And at least one of our clubs from India must be an Asian champion in any of the AFC competitions by 2037, when AIFF will celebrate its 100th year. The grassroots is the foundation, is everything. Better the grassroots, stronger the grassroots, better would be our football landscape. And you all know that it is every sport is the same. Yeah. What we would like, by 26 we will launch a flagship grassroots project, which would then engage by 2047 100 million children into it. And by 2026 we would like to reach 35 million, that's 3.5 crore children through our grassroots program. And we would like to initiate village grassroots program targeting 100 villages, and also rural and tribal area grassroots project in targeting at least 10 districts. And then we would, through our football for school project, we would be targeting 2.5 crore children. And we would like to have 1 million registered players in our registration system by 2026. And we would also like to launch a nationwide volunteer registration program, because you need a massive number of volunteers to run and manage the grassroots program, which is very important. And we would like to train 1 lakh school teachers as the grassroots leaders, trainers for their respective schools, which would be part of Football for School project. And then we will also initiate an elite grassroots development program, because we all say that 6 to 12 is where the grassroots age group lies, and within that we would like to identify those super talented kids and give them a specific program through our specific coach education program. So that is where our target lies for 2026. 47 is there. We would like to have a participation of 100 million. You can say is very steep target. No, a country of by that time 1.75 billion, and if you see US population and what their current participation is in grassroots, is more than 50 million right now. And what we need is enabling mechanism. It is not that AIFF will need to do 100 million. No, we have 100 stakeholders, and those stakeholders have got 100 stakeholders. So the football should be there everywhere, but still 100 million will be means what? That may be 5% of our population. It's not big we are asking. And this is very fair and a fair target to have. But then we need to have, if we able to attract that many kids to play football, we are creating something inspirational, and that is where we are talking about incredible India to have an incredible sport called football by 2047. Yeah? And we will have the capacity in our stakeholder to execute this grassroots program, and then also as part of our infrastructure plan, we will have community facilities by that time where these children can be part of our grassroots. So now the number 7, see, as you all know that number 7 plays an important role in any team. That is where the defense splitting pass comes, that's where the creativity comes, that's where you have a perfect understanding with number 9 or a number 10 or number 11, and that is where all the goals come, and that's where all the success comes. So we have to identify this number 7. This is the missing part. We don't have a number 7 right now.
We can all say we are looking for talent, we are scouting. No. In a country of 1.4 billion right now, we always look for those 30 players, that's all. We cannot have that very small base. This is cannot happen. So we need to change this. So therefore, we will have a data-driven scouting system in place for the national team, whereby we are scouting players on a purely scientific basis, which we are going to work on this project called TDS with FIFA. And Arsene Wenger has personally going to devote his time on this part, and he has already has assigned the work to his key team member to come to India as soon as we confirm, maybe the earliest, maybe February, we can initiate the talent development scheme in India, and that's where we will build the capacity of this key number 7 identification mining project what we will undertake. Yeah, and what we would like to have is we will create an academy licensing program as well to create that value chain in terms of encouraging the clubs to have more talent-driven initiatives within the club, and we will have that level of competition as well. We would like to have 5,000 licensed scouts in the country, and we would like to see in our elite league 100 clubs to be 100 academies. Whatever you call it, those licensed academies will be part of our elite league in different age categories. And then we would like to achieve a talent pool of 1 lakh by 2026. And our big vision 2047 is India to be one of the major hubs of talent in the world. Why not? If we can play cricket well, we can strike well, if we can move up the ladder in many sports and in other facets of life, whether that's technology, whether that's business, whether that's science, we are really going and matching the world. Therefore, we can also be the talent hub of the world, and by that time we will be able to see an iconic player. And the coach education is the number 8 player, but he is an important player. So as we stated that we will have a policy framework by which we will be coming up with our own policy which would encourage more people to take up coaching assignments, coaching roles in India. Right now we have only 8,723 coaches in India, which is absolutely low, which doesn't help the country of a size what we are aspiring. So we are going to go for a steep target where that we would produce 50,000 coaches by end of 2026. In each of these categories, we would like to see a pro license of 72 coaches by 2026, likewise A license, B license. See, without coaches, without good teachers, without good trainers, we won't be able to see good players coming into our system. And that is what the coaches should be there across the country. And like a school without teachers, will not produce that kind of product which would be cracking and taking the country forward. So therefore, we will be aiming. This is a very steep target, but we have the plan to get there. Our vision for 2047 is we would like to have in our system 350,000 coaches, and each state to have its own instructors at each level, and we will be self-reliant. Today we have the data. See how many of Indian coaches are coaching at the top level. Why the coaches are not there. So there are issues, there are challenges, but we will also want to take a leadership role in coach education, because we are, if Nalandas, where we are defining a lot of things through our development in many facets of education, we also would like to be taking a lead role in defining coach education as well for future, for the world as well. Maybe not for the world to begin with, maybe with India, then to Asia going forward.
the competition is where you have to put the lot of focus, and we have to put all our focus into it. This is one of our weakest links. See, when you get the document of 94 pages, you will find that we have stated very clearly where are our problems right now. In every element of this strategic roadmap, we have stated very clearly what are our current status. We are accepting the weaknesses, and that's how we are coming up with this solution that, okay, this is where we need to move. So we need to have, the competition will be the area, the focus for development. So more competitions across India, and that is where we would be striving for. So we will be trying to rebrand, revive. Already you have seen, you have heard, or you have experienced that how our Santosh Trophy is being repackaged, and and it is working on the ground. And similar way, every competition will be redefined in India, so that we will have the right competition from the top of the pyramid to the bottom of the pyramid, and adequate number of the competition. So, and we will decentralize so that the states have more competition, districts have more competition. And what we are going to do is, we will have under 21, under 19, and then we are going to launch a national football games. This is one of the unique concepts we are coming up with to energize the investment into football, to bring about more traction into football. We will launch a national football games. That concept, it would be not every year, but every 2 years. Like what we see, it won't be like a national games as what we experience, but then it will only be football specific national games with more 36 teams, men, women, age group, all together, futsal, all that would create something like a Olympic for football in India. And this is where the objective is to make it an integral part of football development. Competition will be the key driver for football development in India. Like, we will change the existing club competition to proper league structure in every sense, that we will see that what we mean that. And we need to see what the commercial value of the competitions must grow, and where the futsal part will also is the key, that where how we will grow the futsal in different parts of the state, where futsal can play an important role. E-football is likewise. We would like to make an integral part of our competitive landscape. Beach soccer, we already announced 26 January, we are launching the first National Football Championship for men. And then, going forward, we will have for women, and we will also have leagues for by 26 for futsal and beach soccer. And then, these are the national team competitions. We will be not missing any of the FIFA friendlies. We would like to give more exposures to our national team, and the Super Cup will be spread across so that we can see the state teams also can be part of the cup competition. And we would like to revive those old legacy competitions and attach with them to the state competition as well, whether that's Rovers Cup, whether it's Kalinga or AIFF Shield, all that. So therefore it will create more, connect and revive the old memories, which would add value to our competitive spirit and create more opportunities for competition. The target, see, for our top league, by 2026, we will see our top league with 14 teams, the second tier with 14 teams, the third tier will be having 12 teams, and the zonal with, we will have, each zone will have 12 teams, the zonal structure, and the state championship with minimum 10 teams, and the district level minimum 6 teams. So this is where we will be able to engage 40 professional teams at the top, 700 development clubs overall, and it will be a 5-level
league pyramid. From a city level club must be able to aspire and dream to be the top of the league. So therefore, this path is clear now. How the clubs can go up the ladder from a city club to the top of the pyramid, and that is being defined. And for women, this is something new, which would be from next season, we will have 8-team home and away top league, and by 2026 that would be 10. And second division we will have 8 teams, and the zonal with 30 teams total, 6 teams per zone, and the state championship we are expecting every state at least to have 6 teams. But right now, if the one state doesn't have capability to host their own league, we want that they can, 2 states can combine and host league for women. So that way we can expect 20 professional teams, a 4-tier league structure, 100 development teams in women. So this is a big target what we are having, but then this is all been done and this will be executed from next season. And as far as the youth competitions are concerned, for men, we will have under 21 and under 19, and then under 17, under 15, under 30. We want by 26 each youth players to play a minimum of 35 games at all levels. And women, we will have 13, 15, 17, and we will start a university league and also an institutional league, because we all know that there are employment being given to players in forces, in departments, railways and all, but they don't get the game to play because there is no competition structure for them. So we would like to have this as well, and that way we will create more competitions, more games, more game time, and that is where we will see more talent coming into the fray. The Vision 47, this is a league structure where we will have a 20-team top league, 2047, 18-team second tier, and then that's 14-team, 12-team likewise, and the women also we will have more and more number of teams going forward, and which is explicitly made clear, and every state will have a standard cup competition and a league competition by that time, and we are going to define that a player will end up playing 55 games, competitive games in a season, 55 games, and that is where we would like to reach. And the national team, this is the number 10, where we all look into, and this is where we have to focus, and this is where we need to build, connect the whole of India, and 2026 we would like to target that we are top 10 in Asia as men team, and by 2026 our women team should be top 8 in Asia. Right now our men team is 19 in Asia and our women team is 12 in Asia, and we would like to qualify for World Cup under 17, both men and women. Please mark this. We would like to qualify for under 17 men and women by 2026. We have already played both men and women in under 17 World Cup, but being a host. But we would like to set this right, that we would like to qualify in 2026. And that is where we are targeting. And by 2036, we would like to be top 7 in Asia as far as man team is concerned. So that way you can already anticipate what is that means for national team. So national team will be defined by a philosophy of national philosophy. The players, the team, the exhibition, what they will do. So what we want is the national team to exhibit a brand of football which would attract
masses, and that would be a point. Like we all know that success will attract, and we have to make this a success. And whatever we do, everything culminates here in this point, and they will deliver. And we have to deliver as one team. And this is where our focus is. And 2047 focus is we want to be top 4 in Asia, both men and women. Absolutely, this is possible. If we see or if we study those who are in top 4 in Asia today, and top 6 in Asia have played the last World Cup. 2047, we would like to be top 4. Yes, we can. We can, with all the effort as a team, we can make it. So that's the number 10 over number 11. This is all about commercial part. See, AIFF current marketing, the revenue comes, say our budget is around 80-85 crore. The 61% which comes from the marketing partner, 11% from FIFA, 9%, 8% from government grants, AFC support, which is 7%, and 6% from our coach education, and others are 7%. So this definitely, and how we spend. Spending is administration, everything is 60%, development activities 18%, infrastructure is that is where we are invested into that of the training center in Calcutta. Men's team, national team 16%, 9% women's team, 22%, 32% in the competition. Women's competition is so this we would like to change, because the expenses and the whole revenue will need to change, because to reflect what at the end we need more budget in our system. Today we don't have that. So through repackaging, restructuring, bringing in a complete business unit, we are going to target more revenue. And through diversification through licensing, through other asset monetization, and creating more assets, we will create more revenue in our system. And that is where we will be able to reach to a sustainable model in Indian football. See, we would like to increase our revenue by 2026 to 500%. And we will be launching 3 flagship television properties, which would be bringing sizable revenue to our system. So we are targeting straight away 500 crore revenue from today 85 crore to 500 crore by 2026, and then by 2047 we are targeting a 5,000 revenue, that is 20% CAGR, to 2047, 5,000 crore. That's not big enough for a country which will be some $300 trillion economy by that time. It's a minuscule percentage, but then we have to exhibit the kind of work within AIFF, within our ecosystem, that to achieve that. And we already have the experience that Indian sport is not that something we'll be doing for the first time. They're already exhibiting bigger numbers than this. Therefore, we live in the same ecology, same geography, same business ecosystem, same mindset, but the sports are different. But only thing is, we need to learn of all of them, and we need to put that into practice. And football, globally, there are many things we can learn to put into our commercial ecosystem, so as to make our football a sustainable model. And without that sustainability, we will not reach there. And we are completely focused to bring about this change. A commercially successful sport can only grow to that level to compete globally. Our players' economic value will have to be increased. It has to be raised. And that is where
that bigger connect will come, bigger aspiration will start coming in. So that's all from our end, from my end, to put across, this 94-page document in front of you. I'm sure you have hundreds of questions, and I'm sure we are prepared to answer all that. Thank you. देखिए, फुटबॉल फेडरेशन के काम है फुटबॉल के उन्नति करना और अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन बढ़े, इसकी निश्चित करना। और कोई भी काम करने के लिए एक अकेला व्यक्ति जितना आगे ले जा सकता, कलेक्टिव एफर्ट उससे कई गुना आगे ले जा सकता। और इसीलिए मैंने अपने प्रारंभिक भाषण में कहा, आप भी हमारे हिस्सेदार हैं, आप भी हमारे पार्टनर हैं, क्योंकि आप भी भारतीय हैं और भारत का हित हो और फुटबॉल के माध्यम से हो, हम सभी चाहते हैं। तो इसलिए आपका हर सुझाव जो है, हमारे एक सजेशन लेने की ईमेल आईडी है, आप चाहे तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो ईमेल आईडी ले सकते हैं हमारे डिप्टी सेक्रेटरी जनरल सुरेंद्र के पास से। और हर सुझाव जो है, सुझाव कमेटी इवैल्यूएट करके उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर जोर देती है। और आपका ये बहुत आसान है सवाल करना। मान लीजिए मैं आपके शादी में गया और आपने मुझे रसगुल्ला दिए और मैंने बोला भाई रसगुल्ला तो दिए ठीक है, संदेश नहीं दिया, गाजर का हलवा भी दे सकते थे, लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे बुलाया और रसगुल्ला दिया। पहली बार और कम से कम एक लंबा समय के बाद 36 मेंबर एसोसिएशन जो है उनको किस संतोष ट्रॉफी में पार्टिसिपेशन में उनकी सुविधाएं दी गई, हम उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। और जो नहीं हुआ है उसको हमको आगे करना है। एक स्काउट टीम बनाई गई, सेक्रेटरी जनरल ने बताया कि अंडर 17 का हमारा लक्ष्य क्या है, और उस एंटायर स्काउटिंग टीम अंडर 17 27 लड़के को स्काउट किया गया है, ताकि जब ये फाइनल राउंड खेलने जाए 27 में से कुछ और एग्जिस्टिंग जो टीम है उसके साथ 27 को लिया गया। 80 करोड़ के बजट में आपको पुरुष और महिला के 3 टीम चलाना पड़ता है, और हम सभी चाहते हैं कि सभी टीम जो जीते और वर्ल्ड कप खेले। और हम सभी ने ये प्रश्न करते हैं, यदि 14 लाख 14 करोड़ 1 करोड़ 1,40,000 आबादी वाले देश फीफा रैंकिंग में आ गए हैं, तो 140 करोड़ वाले क्यों नहीं आ गए? वो भी हमें देखना पड़ता है। इसीलिए संतोष ट्रॉफी के फाइनल राउंड में सभी मैच में स्काउट होंगे, और ये जो मैचेस स्टेट में जो 6 जोन में कराया गया है, 6 जगह पे कराया गया है, वहां मेंबर एसोसिएशन और स्टेट एसोसिएशन को ये अथॉरिटी दी गई थी, आपके वहां पे जो भी एक्स प्लेयर है या फुटबॉल से जुड़े हुए व्यक्ति है जिनको लगे कि उनकी नजर है टैलेंट को समझने की, परखने की, आप उसकी सदुपयोग करें, ताकि स्काउटिंग भी डिसेंट्रलाइज हो। रही बात पैसा की, बिना पैसा के एक दिन नहीं गुजर सकता एक व्यक्ति। आप और हम यहाँ बैठे हैं, एक कलरफुल प्रेजेंटेशन दिया, इसकी भी एक कीमत है। आप यहाँ आए और घर वापस जाएंगे, उसकी भी एक कीमत है। भले पैसा सुनने में खराब तो लगता है, लेकिन बिना पैसा के जीवन नहीं है। हाँ, तो क्या आदमी डाका डाले, क्या बैंक लूटे? वो नहीं करे। तो इसके लिए जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। खेल को बढ़ाने के लिए पैसा की आवश्यकता है, लेकिन पैसा प्राथमिकता ना है। इस विषय को भी ध्यान में रखा गया है। और मैं समझता हूं जिस तरह से क्या सेक्रेटरी जनरल ने जो आपके सामने रखा, सब सिर्फ 10% रखा। आप सभी घर जाते हो, ऑफिस जाते हो, आपको पूरा मिलेगा। वो पढ़ने में आपको 2.5 घंटा लगेगा, और मैं वो दावे के साथ कह रहा हूं।
तो मानिए कोई प्रेजेंटेशन यदि आपको पढ़ने के लिए 2.5 घंटा लगे, उनको बनाने के लिए कितना समय लगा हो? तो आज क्या हम ऐसा सुनना चाहते हैं, फलाना ने देश के लिए खेला था, आज ट्रीटमेंट के लिए उसके पास पैसा नहीं है, ऐसे पड़े हुए हैं, उसका घर नहीं चलता, एक बेनिफिट मैच करा दो। फलाना ने अच्छा खेलता, उसके पास जूते नहीं है, उसके जूते खरीद के दो। क्या हम ये एक गरीब भारत देखना चाहते हैं? गरीब भारत का फुटबॉल देखना चाहते हैं? इसलिए मैं समझता हूं कि रेवेन्यू मॉडल की आवश्यकता है और हमारे पास उसके सारे पोटेंशियल और संभावनाएं हैं। यदि दूसरे स्पोर्ट रेवेन्यू में अपने में आत्मनिर्भर बन सकती है, तो मैं समझता हूं कि फुटबॉल विश्व में सबसे अधिक देशों में खेले जाने वाली एक स्पोर्ट, और भारत जैसे देश में जो कि आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है विश्व की और 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, उसमें भी पूरी की पूरी संभावना है कि वो आत्मनिर्भर बने। पॉलिसी बनती है और एक लंबे समय के लिए सोच के बनाया जा रहा है। एक 4 साल, एक 15 साल और एक 25 साल, 26, 37 और 2047 के लिए। हमने कहा कि हमारा कोई दर्शन नहीं है फुटबॉल का, तो जब भी जो भी चीफ कोच बन के आते हैं नेशनल टीम के लिए, और वो जो कहते हैं हम वही मानते हैं, वही फॉलो करते हैं। तो हम क्या, हमारा ये क्या कहना है कि अपना एक फुटबॉल फिलोसफी हो, हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर, हमारा यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन, हमारे यहाँ के ह्यूमिड नेचर, हमारे यहाँ के एवरेज बॉडी वेट, तो यहाँ पे हम इस ये बॉडी तो अपने को, हम तो एक अफ्रीकन नाइजीरियन नहीं बन पाएंगे ना ही आप एक ईस्टर्न यूरोपियन बन पाएंगे। तो मेरे पिताजी जैसे थे, मेरे बेटा पोता भी वैसे ही होगा, आपका भी वैसे ही होगा। ये हमारा जीन और हेरिडिटी है। तो ये आवश्यक है इसको समझने के लिए कि हमारा देश में हमारा हेरिडिटी, हमारे जीन, हमारा मेडिकल साइंस क्या है और इससे हम क्या कर सकते हैं। मेसी बनने से पहले कोई सोचा था कि उस हाइट का, उस बॉडी वेट का कोई खिलाड़ी विश्व के 1 नंबर व्यक्ति बनेगा, फुटबॉल खिलाड़ी बनेगा? कोई भी व्यक्ति कहता है कि खेलने के लिए 6 फीट 2 इंच होना चाहिए, 85 kg वजन होना चाहिए। मेसी में दोनों में नहीं है, दोनों चीज मेसी में नहीं है, लेकिन मेसी विश्व के 1 नंबर खिलाड़ी। तो भारत में भी अधिक से अधिक खिलाड़ी का यही बॉडी वेट और हाइट है, तो अपना दर्शन बने और उसी पर देखा जाए कि क्या स्ट्रैटेजी से खेलने से हमारे नेशनल टीम, हमारा डोमेस्टिक फुटबॉल की जो है तरक्की हो सकता है इसी साधन के अंदर। नहीं, भरवली कैसे हो सकता? आप देश के फुटबॉल के लिए बात कर रहे हो। आज जो टेक्नोलॉजी है और जो इंटरनेट की जमाना में उनके घर तक भी ये न्यूज पहुंचे। भरवली तो कुछ होता ही नहीं, हमें 1 स्क्वायर फीट जमीन लेने के लिए भी पेपर में लिखते हैं। तो जो ये फीफा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू आएंगे, और हम इसीलिए अपने शुरू में भी कहा है कि भारत जो है साउथ एशियन फेडरेशन, एशियन कॉन्फेडरेशन और फीफा तीनों से एक अच्छा संबंध बनाना चाहती है, ताकि हम जितने पीछे आज के तारीख में फीफा रैंकिंग में, तो हम फुटबॉल को तरक्की कर सके। और जैसा कि बिना टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के आप अपना प्लान नहीं बना सकते हो, किसको सिखाओ? तो जो खिलाड़ी स्विमिंग अच्छा कर लेता है उसको जबरदस्ती हम फुटबॉल करेंगे तो ना उससे स्विमिंग हो पाएगा ना फुटबॉल। तो ये आवश्यक है उसकी टैलेंट आइडेंटिफाई हो, और आइडेंटिफाई होने के बाद किस तरह से उसकी नर्चर किया जाए। सर, उनका एग्जैक्ट रोल क्या होगा उसमें? बताया जाएगा। उन्होंने जब अगले महीना हम उस पर भी रखेंगे, उस पर भी विशेष विस्तार से बताएंगे। नहीं, देखिए सरकार की निर्णय क्या होगी, बजट क्या होगी, वो तो हम तय नहीं कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली एक नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन होने के नाते सरकार के पास हमारा दरखास्त रहेगा कि उनके तरफ से अधिक सहयोग मिले। और मैं समझता हूँ कि देश के जो कानून है उसके आधार पर जो जहाँ तक उनको देना चाहिए सरकार की तरफ से मिलेगी। और हमें अभी तक जब भी हमने सरकार से कोई भी सहयोग मांगा तो हम खाली हाथ वापस नहीं आए। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब आई लीग और ISL लेकर के तरह तरह की बातें हो रही थी और ऐसा कहा जा रहा था कि AIFF जो है आई लीग को खत्म कर रही है या तो आई लीग को नहीं देखा जा रहा है,
और इसके साथ भी बहुत सारे विषय चल रहा था। तो हमने ये तय किया कि आईएसएल मैच कवर करने के लिए जिस टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की कैमरा की इस्तेमाल होता है, उसी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की कैमरा आई लीग में भी हो, और उसकी मैच भी 132 में से 100 से अधिक मैच लाइव टेलीकास्ट हो। और जो चैनल, क्योंकि आज आपके पास जो प्रीमियम चैनल है वो आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं आते आपकी डोमेस्टिक लीग या आई लीग या संतोष ट्रॉफी दिखाने के लिए, लेकिन सरकारी जो डीडी स्पोर्ट्स के चैनल है उस पे भारत के फुटबॉल लाइव देखा जाए और घर घर पहुंचे। ये हमने पिछले समझता हूँ 1-1.5 महीना पहले हमने सरकार के पास रखा था, और सरकार ने हमें इसकी सहयोग और इस पर जो भी मैच होनी चाहिए आईएनबी मिनिस्ट्री की तरफ से ये सपोर्ट आया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली हमें पूरा विश्वास है कि फुटबॉल की तरक्की के लिए, फुटबॉल की उन्नति के लिए सरकार के पास जाने से सरकार कानूनन जो किया जा सकता है वो जरूर करेगी। एक तो क्या है कि जो आज संतोष ट्रॉफी पहली बार मैं समझता हूँ कि जो भारत के बाहर उसकी जो आयोजित हो रही है, तो इसमें से भी उनका भूमिका है, फीफा की भूमिका है, और इसको संतोष ट्रॉफी को हमारा एक नेशनल चैंपियनशिप को इंटरनेशनल बनाने के लिए अभी जैसा कि हमने टैलेंट डेवलपमेंट के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए जो आर्सेन वेंगर की बात की, उसमें भी फीफा का भूमिका रहा कि उन्हीं के सहयोग के माध्यम से हो रहा है। अभी हम जो अंडर 21 चैंपियनशिप के विषय में जो प्रेजेंटेशन में रखा गया, करीब 350 डिस्ट्रिक्ट में जिस चैंपियनशिप को लिया जाएगा, और जैसा कि जिस तरह से साजी ने आपके सामने फिगर रखा, आपको भी आगे मिलेगा, उसमें भी फीफा का सहयोग रहा। आज फीफा प्लस जिस तरह से पूरे विश्व के फुटबॉल दिखा रही है, और भारत के भी अपना किस तरह से एक अपना ऐप को, अपने डिजिटल मीडियम जहाँ फुटबॉल, भारत के फुटबॉल भारतीय रूप से दिखाया जाए, ये बहुत सारे विषय जो है इस चर्चे में आया। और कुछ मैं समझता हूँ कि जो जॉइंट डिस्कशन, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपकी फुटबॉल अच्छा हो, लेकिन आपको एक समय आपके पास ये था कि पीके बैनर्जी हाफ टाइम में आपकी टीम 1 गोल से पीछे है, और पीके बैनर्जी में हाफ टाइम में आके आपको वोकल टॉनिक दे दिया, और सेकेंड हाफ में वो मैच आपने 2-1 से जीत गए। वो एक जमाना था। अभी फुटबॉल जो है फुल ऑफ मेडिकल साइंस, आईटी टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स साइंस के साथ है। शायद हम फुटबॉल के उसमें पीछे, विश्व जहां है आज हम वहां नहीं है, तो हमें वो पहुंचने के लिए जो वहां पर गवर्निंग बॉडी जो है, और जो जिसके लिए उनके रोज का जहां वहां उठना बैठना है, उनके हमें सहायता चाहिए। और ये सारे विषय जो है उनसे चर्चा हुआ है, और मैं समझता हूँ कि फीफा एएफसी के सहयोग से भारत के फुटबॉल तरक्की करने में इसकी गति की वृद्धि होगी। See, as we don't want to go back, but what could have happened, but then within our strategy, right now it was not fitting in. So therefore, it is consistent with our roadmap. If you have seen, that we haven't stated anything like hosting big events right now. Maybe in future, if we cross the path, then we definitely will look into. But right now, that doesn't fit into our strategic objective. That is the only reason. देखिए, अभी मेरे पास एक कागज है, आपके पास भी होगा उसकी कॉपी, जिसमें 1993 में ईरान का फीफा रैंकिंग 59 था, और बाद में 2003 में 28, 13 में 33 और 2023 में 24 बना। आज एशिया के टॉप टीम में से ईरान है। जापान ने 43 था 1993 में, और आज 20 है रैंकिंग। जो इस प्रेजेंटेशन में बात रखा गया है, जो 11 बिंदुओं पर साजी ने आपके सामने रखा, वो एक कलेक्टिव और कॉम्पोजिट प्लान है।
हम जैसा यदि एक सरल रूप से कहें, आप जो भी आपके पसंदीदा खाना बनाते हैं उसमें थोड़ा हल्दी, नमक, मीठा, मिर्ची और फिर वो सब्जी भी होता है, किसी एक से तो होता नहीं है। तो इसी तरह से जो 11 बिंदुओं बताया गया उसमें एक अच्छा गवर्नेंस की आवश्यकता है, उसमें एक रेवेन्यू मॉडल होनी चाहिए, उसमें एक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और उसके लिए अच्छे कोच एडुकेटर चाहिए और एडुकेटेड कोचेस फिर अच्छे से टैलेंट को डेवलप करें और वो जो कंपटीशन में जो अच्छा रेफरिंग करे, उस रेफरिंग को फिर अच्छा रेफरी बनाना है। तो और फिर आप तक पहुंचे। इस घर पे, इस सभागार पे 50-60 लोग हैं, लेकिन हमारा इस कार्यक्रम 50 करोड़ तक पहुंचना चाहिए, उसकी भी माध्यम होनी चाहिए। तो ये जो सारे विषय है उस एक मान लीजिए आप बिरयानी खाना पसंद करते हैं, पुलाव खाना पसंद करते हैं, जैसा हर इंग्रेडिएंट उसमें देना पड़ता है, उसी तरह इस प्रोजेक्ट में भी देना पड़ेगा। हम तो चाहते हैं कल फीफा वर्ल्ड कप खेलने, जैसा आपने 83 क्रिकेट की बात करी, जब तक एक भारत जैसा विविध देश में हम भारतीय तब बनते जिस दिन इंडिया का क्रिकेट मैच हो। तो हमारा सपना पहले रहेगा, ये बात फुटबॉल के लिए भी हो, 135 करोड़ लोग उस दिन भारतीय बन जाए और उसी के साथ हर झगड़ा भूल जाए और ब्लू जर्सी पहन के और तिरंगा लेकर के बाहर निकले, क्योंकि आज भारत का फुटबॉल मैच चल रहा है। अभी साजी ने जब बताया आपके सामने 3.5 करोड़ बच्चे तक हम पहुंचना चाहते हैं, विलेज और ट्राइबल रूरल बेल्ट में हम 2.5 करोड़ बच्चे तक पहुंचना चाहते हैं थ्रू फाउंडेशन फुटबॉल फॉर स्कूल के माध्यम से। ये जो नंबर हम 20,000 क्लब बनाना चाहते हैं, ये जो नंबर्स है ये सबको नेशनल टीम में नहीं खिलाना है। 2.5 करोड़ बच्चा के नेशनल टीम नहीं खेलेंगे, लेकिन पहले आपके व्यूअर्स को तैयार करना पड़ेगा। आपको बोलना नहीं पड़े, आप खुद ब खुद आए, स्वयं से आए मैदान में फुटबॉल खेलें और जिस दिन फुटबॉल हो आप देखें। तो फुटबॉल को आपको मुझे खींचना है, पहले एक मास फुटबॉल ऑडियंस बनाना है। आज हम बाजार में जाते हैं और कोई भी जो नॉन ब्रांड है जल्दी से हम खरीद लेते हैं, भले दाम कौन सा भी हो। तो हमें फुटबॉल को उस ब्रांड डेवलप करना है, किसी को भी लगे भाई फुटबॉल सही है। और फुटबॉल इसलिए सही है क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको मेसी बनना है, रोनाल्डो बनना है। फुटबॉल इसलिए सही है कि आपके कैरेक्टर डेवलप हो सकता है, आप में कॉन्फिडेंस आ सकता है, आप हेल्दी हो सकते हो, आप सोशल हो सकते हो। बहुत सारे विषय फुटबॉल आपको जो है सिखा सकती है जीवन में। तो पहले यदि हम फुटबॉल को डेवलप करें, हम पहला दिन कोई सामान बेचते नहीं है। मैंने सुना, पता नहीं सच है झूठ है, वो पहले चीनी लोग आपको ब्रिटिश टाइम में मुफ्त चाय पिलाते थे और चाय पीने के बाद पता चला कि चाय एक पीने लायक चीज है, ये तो एक कड़वा है, और फिर आज हम सब चाय खरीदते हैं। पहले दिन यदि वो चाय पत्ता लेके निकलते थे और बेचने के लिए, तो आज बेच नहीं पाते। तो हमें उसी तरह फुटबॉल को जो है आज पहले लोगों तक पहुंचाना है कि फुटबॉल हमको देखना है, चाहे कैसे भी फुटबॉल हो। कल हम फुटबॉल को बेचेंगे, जब फुटबॉल को बेचेंगे तब फुटबॉल विश्व के टॉप में से आएगा, ये मेरा विश्वास है। कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, ठीक है ना। आप जब क्या है कि आप किसी बच्चे को, भले आज मेसी का भी बेटा चाहे तो मेरे अर्जेंटीना नेशनल टीम में तो खेल नहीं सकता कि उसके पिताजी का नाम मेसी है ना, उसको अपने हुनर पर ही खेलना पड़ेगा। तो इसीलिए कौन हारे कौन जीते उसके लिए बहानेबाजी तो बंद है। यदि गलत है तो गलत है, और गलत है तो उसको सुधारनी भी है, ठीक है। रही बात भारतीय कोचों को महत्व देना, हमने अभी ये निर्णय लिया कि जो इतने सारे फॉरेन प्लेयर्स टॉप से लेकर के बॉटम चैंपियनशिप तक खेलते हैं, आप कहीं भी चले जाइए सर, आप है ना एकदम रिमोट टू रिमोट प्लेस चले जाइए और 2 टीम का मैच हो रही है, वहां आप देखिएगा कि उसके जो स्ट्राइकर है ना, दोनों स्ट्राइकर अफ्रीकन है और पूरा खींचतान के गोल कर रहा है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टैलेंट के आधार पे गोल कर रहा है, इसीलिए कर रहा कि वो फिजिकली सुपीरियर है। तो यदि मान लीजिए ऐसा देश भर में 1000 क्लब है आज के तारीख में,
जो डूरन रोवर्स आईएफएसएल, आई लीग, आईएसएफ नहीं खेलते, फलाना XYG मेमोरियल कप खेलते हैं, कोई इन्विटेशन कप खेलते हैं। ऐसा यदि 1000 क्लब हो तो आप देखिए कि 2000 फॉरेनर खेल रहे हैं। यानी कि आपने खुद से अपने स्ट्राइकर के 2000 जगह बंद करके रखे, और फिर आप बोलते हैं आपके पास नेशनल टीम में गोल करने लायक स्ट्राइकर नहीं है। आप बोलते सुनील छेत्री के बाद दूसरा स्ट्राइकर आया नहीं। आपने तो खेलने का जगह बंद कर दिया, वो खेलेंगे कहां? इंडियन स्ट्राइकर का तो जगह है रिजर्व बेंच। तो हमने इसलिए तय किया है कि वो मेरिट पे ही फॉरेन प्लेयर को लिया जाएगा, बिना मेरिट का कुछ नहीं। और टॉप के लीग छोड़ करके बाकी जो है सारे में भारतीय खेलेंगे। और हम तो चाहते हैं, रेफरी प्रोग्राम के विषय में विस्तार से आपके पास भी गया होगा, भारत के रेफरी विश्व कप में जाए, मैच वहां ऑफिशिएट करें। हम कब तक देखेंगे और हाथ में ताली बजाएंगे? मुझे किसी ने पूछा आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? मैं बोला किसी को नहीं। किसको सपोर्ट करूं? मेरा देश नहीं है, मुझे खराब है, मुझे दुख लग रहा है। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि हम जाए और किसी के जर्सी लेकर के और किसी के झंडा लेकर के फोटो खींचे और दे। कब हम करेंगे अपने अपने खिलाड़ी की जर्सी? कब हम अपने तिरंगा लेकर के उसी वर्ल्ड कप के मैदान में रहेंगे? हमें वो सोच लानी, पहले हम अपने सोच में बदल लाएंगे ना, कि हम जाएंगे और विश्व कप में हमारी देश होगी और हम उनके लिए चिल्लाएंगे। भारत जो है सेकेंड लार्जेस्ट व्यूअर्स था 2022 की विश्व कप में। भारत को क्या मिला? भारत के फुटबॉल को क्या मिला? हम तो चाहते हैं कि भारतीय कोच आ गया है, भारतीय रेफरी आ गया, भारतीय खिलाड़ी तभी आ गया है। तो हमको तो पहले ये विश्वास लाना पड़ेगा कि हम आ सकते हैं, उसके बाद करेंगे। ये सवाल आएगा हमारे पास। हमने जो 3.5 करोड़ ग्रास रूट यूथ बच्चे तक पहुंचने के बाद किया है। मैंने ये नहीं कहा कि वो 3.5 करोड़ हमारे टैलेंट पूल है और वहां से हम टैलेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। हमने कहा कि हम पहले मास पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे। एक टैलेंट तो प्रतिभा जो है जन्म जाता है, उसके फिर बाद में उसको एक मोल्ड करना पड़ता है सही समय पर। अब हम समुद्र के नीचे मोती ढूंढने जाते हैं, हमको तो ये पता नहीं है ना कि उतने में से आ जाएगा। हम तो जितने पूल जितना भरे और वहां से फिर आए। टैलेंट का एक टीम, स्काउटिंग का एक टीम बना है, लेकिन पहले जब पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो पार्टिसिपेशन से मान लीजिए जो बॉटम लेवल यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है और डिस्ट्रिक्ट के तरफ से जब ऊपर आए, स्टेट आए, तो अपने को एक लार्जर पूल मिल सकता है। अभी यदि आप देखे होंगे पिछले 20 साल के आप नेशनल टीम के स्क्वाड देख लीजिएगा। 2022 में हम है, अब 2000 तक देख लीजिएगा, पिछले 22 साल के। अब देखिएगा ले दे के 45 से 50 प्लेयर रहता है और उनको ही 15 साल या 12 साल में उसी में से 25 या 30 चुना जाता है। लेकिन हमारा देश में मुझे ऐसा मानना है कि उसके बाहर भी खिलाड़ी है और वो भी टैलेंट इक्वल है, लेकिन हमने कभी अपने आंख को उस तरह से दृष्टि को बढ़ाया नहीं। तो इसीलिए आवश्यक है कि टैलेंट पूल बढ़े। तो टैलेंट पूल भरने से ही अपने पास टैलेंट आएगा। नहीं तो देखिएगा पार्टिसिपेशन 3 या 4 स्टेट से ही नेशनल टीम की पार्टिसिपेशन होती है, और हम कभी भी बात करते तो 3 या 4 स्टेट की बात करते हैं कि फुटबॉल जो है ना बंगाल, केरला, गोवा। फुटबॉल दूसरी जगह भी होता है, हमको वहां तक जाना है, वहां तक पहुंचना है। अभी मुझे किसी ने बता रहा था, नाम नहीं कहूंगा, उसको नेशनल टीम में चांस मिला है, सिर्फ 9 मैच खेला है खिलाड़ी, उसको 9 मैच में नेशनल टीम में चांस मिला है। तो कभी क्या होता है, हम जब जिसको ये जिम्मेदारी देते हैं, दायित्व देते हैं स्काउट करने के लिए, शायद थोड़ा सा मेहनत यदि उनके तरफ से बढ़े तो अच्छा रहेगा। और एक व्यक्ति 2 व्यक्ति से संभव नहीं है ये काम, इसके लिए इसकी संख्या की भी बढ़ोतरी होनी चाहिए।